मैं शुरू करता हूँ, कहाँ गया शेयर स्क्रीन, ये अपना व्हाइट बोर्ड आ गया। हमने लास्ट टाइम शुरू किया था एडजॉइंट। तो वी सेड दैट इफ T is a bounded linear operator from H1 to H2 where H1 comma H2 are Hilbert spaces, then there exists this T star, which is a bounded linear operator from H2 to H1 with the characterizing property. What was that? That was with the property, with the characterization property या जो उसका defining property है वो ये था. What was that? X T star of Y is equal to Txy for all X belonging to H1 and Y belonging to H2. So this is the defining property of the T star is called adjoint of T. T star is adjoint of T. Okay. और भी हमने कुछ इसकी प्रॉपर्टीज की थी. वो ये था कि T डबल एडजॉइंट जो है it is the same as T, and of course norm of T star is the same thing as norm of T. I think यहाँ तक हमने किया था. इसके बाद नेक्स्ट जो है, तो ये जो एडजॉइंट का ऑपरेशन है ना, वी कैन थिंक ऑफ दिस टेकिंग एडजॉइंट एज एन ऑपरेशन, यानी वी कैन थिंक ऑफ कि टी को हम टी स्टार बना सकते हैं वाया दिस प्रॉपर्टी. सो एक चीज इसमें है कि अगर टी बिलोंग करता है B1 B2 को, राइट, देन टी स्टार बिलोंग्स टू B2 BH2 H1. And of course, if H1 is equal to H2, अगर ये सेम स्पेस है, is equal to H, तब हम कह सकते हैं, इस सब को हम मान सकते हैं कि if T belongs to BH, then T star also belongs to BH. BH का मतलब है कि T अगर मैप है from H to H, which is bounded linear, है ना, then T star is also a map from H to H, which is a bounded linear operator with these properties. So we can easily show these properties of the adjoint. Let me write down it as a theorem. The adjoint operation T goes to T star from, of course, where are we? We are, T belongs here, H1 H2 to B, then we T star belongs to BH2 H1 और on BH. ये भी हो सकता है कि हम H1 H2 को एक ही मान लें, you know, यहाँ मैं लिखूंगा taking H1 H2 H1 equal to H2 equal to H. उस सिचुएशन में BH बन जाएगा has these properties. First one कि T1 plus T2 का जो स्टार है, it is the same thing as T1 star plus T2 star. Second property, alpha T the star is equal to alpha bar T star. And of course composition अगर well defined है, तीसरी property, अगर मैं इसका मतलब product का मतलब उनका composition, T1 T2 का star is equal to T2 star into T1 star, लेकिन ये तभी apply होगा H1 जब H2 के बराबर होगा in this case, क्योंकि तभी composition well defined. And of course बस यही तीन properties है, and they're very easy to prove. We can just use this defining characterizing property of the adjoint to get these things. चलो एक बार मैं करता हूँ, बाकी तुम कर लेना. जैसे पहली property है, we know that x t1 plus t2 का जो star है by our definition applied to y should be equal to t1
plus T2 of x applied to x, comma y. Now using the properties of the inner product, it is the same thing as T1x y using the linearity of the pointwise addition and linearity of the inner product. This should be equal to this thing. But again, using the property of the adjoint, this is x T1 star y plus x T2 star y. Now again, using the properties of the inner product, I can write it as this is x T1 star y plus T2 star y. Taking everything here, so it would imply that इसको left hand side पे ले जाएंगे with x, T1 plus T2 whole star applied to y minus T1 star y plus T2 star y. This thing, this is true for all x belonging to H1 and y belonging to H2. Now this thing must be 0 for all x belonging to H1 and y belonging to H2. अब अगर x के साथ किसी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 है for any x, then that vector has to be 0, and it would imply that T1 plus T2 star at y is equal to T1 star at y plus T2 star at y for all y belonging to H2, which would imply that T1 plus T2 star at y is equal to T1 star plus T2 star using the pointwise addition for all y belonging to H2. इसका मतलब इस मैप और सॉरी यहाँ मैंने गलत कर दिया, एक यहाँ पे स्टार है. Let me erase it. Okay, तो इसका मतलब their action on H2 is same, and hence it implies that T1 plus T2 का star is equal to, इसी तरह से बाकी properties भी identically तुम क्या बोलते हैं कर सकते हो. So you will do that yourself. ठीक है. So अब इसी तरह से हम इन ऑपरेटर्स को देखेंगे. अब हमें पता चला कुछ, मतलब अब हम विद इन यहाँ रह सकते हैं. नाउ थिंक अबाउट बी एच. अब विद इन बी एच एक ऑपरेशन है जो टी को ले जाता है टी स्टार, where t is a bounded linear operator from h to h, of course, which would be determined by the inner product in the case of Hilbert spaces. So next जो हम करेंगे वो ये है, ओके, थ्योरम. चलो इधर थ्योरम लिखिएगा, इतना समझ आएगा. If T belongs to BH, if T is a bounded linear operator on a Hilbert space, where H जो है is a complex inner product space, it need not be complete कहने का मतलब. और दूसरी बात यह है कि it has to be a complex space, यानी रियल के लिए ये जरूरी नहीं है. Complex inner product space, then T would be a zero operator if and only if Tx dot product with x is equal to 0 for all x belonging to H. T zero operator तभी हो सकता है if and only if this is true. Of course, one way तो easy है. अगर T zero है, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है T of x is equal to 0 for all x belonging to H, which would imply that Tx x is equal to 0x, which is equal to 0 for all x belonging to H. Right? So एक साइड तो इजी है कि अगर ये ट्रू है तो T of x x 0 है for all x belonging to X. Important is the other one. Now conversely, suppose that x x is equal to 0 for all x belonging to H. We have to show that then T has to be a zero operator.
So let's use this property. Let x, y belong to H and alpha, beta be complex numbers. It implies that then 0 must be equal to T of alpha x plus iota beta times y, comma alpha x plus iota beta y. क्योंकि मतलब this is a vector inside H, right? Because it is closed with respect. This is some x inside H. So txx is 0 by our assumption. txx to x की जगह मैं ले सकता हूँ alpha x plus iota beta y because it's a vector space and it is a vector inside H. Okay, इसको हम थोड़ा सा अगर simplify करेंगे using the linearity of T and linearity of the inner product, I would get, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ T, या मैं ऐसे लिखूँ, ऐसे लिखता हूँ alpha T of x plus iota b of y. Oh, sorry for something. Okay, जरा ये मैं इसको मैं use the linearity of T. T is a boundary linear operator on H, so it would be alpha T of x plus iota beta T of y, comma alpha x plus iota beta y. राइट, ये 0 के बराबर है. अब अगर हम इसको एक्सपैंड करेंगे तो क्या होगा? दिस विल बी अल्फा टाइम्स tx alpha x plus iota beta y plus iota beta ty using the linearity of the net product alpha x plus iota beta y. So of course using it once again, you know? So you would actually get alpha into tx alpha x, तो यहाँ बाहर मैं ऐसे कर देता हूँ, प्लस tx comma iota beta y of course plus iota beta बाहर, let me ऐसे ये ऐसे है, okay, t of y comma alpha x plus t of y comma iota beta y. राइट, इसको मैं एक्सपैंड किया. व्हाट वी डू इज, अगर हम इसको ऐसे ही रखें अल्फा, ये अल्फा को मैं बाहर निकालूंगा, अल्फा बाहर आ जाएगा, सो यू गेट टी एक्स एक्स, राइट. और ऑफ कोर्स यहाँ से आ जाएगा बाहर आयोटा बीटा का कॉन्जुगेट टाइम्स टी एक्स वाई. ओके, देन आई हैव प्लस आयोटा बीटा. अंदर अगर मैं देखूं, यहाँ अल्फा बार आ जाएगा बाहर इंटू टी वाई ऑफ एक्स, राइट, प्लस आयोटा बीटा बार यहाँ आ जाएगा बाहर, दूसरे वेक्टर से हम निकाल रहे हैं, इंटू टी वाई. मैं चलो था ये, चलो मैं इसको यहाँ लिखता हूँ. एनीवेज, अब मैं क्या तुम्हें बताना चाह रहा हूँ, यहाँ पे ये जो ये टी एक्स एक्स है, क्योंकि हमने इज्यूम किया है ये 0 है, यानी ये टर्म 0 हो जाएगी, ये खत्म हो जाएगी, और ये जो यहाँ टर्म बचेगी ना, जब मैं आयोटा बी बाहर निकालूंगा तो ये टर्म भी 0 है, यानी ये और ये 0 होगा तो हमारे सिर्फ ये दो टर्म्स बचेंगे. तो मैं वो बताना चाहता हूँ. नेक्स्ट पेज में मैं डायरेक्टली वही लिखूंगा, यानी आई एम गेटिंग 0 इज इक्वल टू पी, अगर मैं पीछे जाऊं, ठीक है ना, ये टर्म बचेगी, सो हैव अल्फा इनटू आयोटा बीटा बार टाइम्स टी एक्स वाई. सो यानी 0 इज इक्वल टू अल्फा into iota beta bar into txy प्लस इसी तरह से वहां से iota beta into alpha bar into tyx. ये 0 के बराबर है for all xy belonging to H and alpha beta any complex numbers. Once I've done that, I putting alpha equal to beta equal to 1,
तो क्या मिलेगा अगर मैं दोनों को 1 दे दूं वैल्यू, सो यू वुड गेट टी ऑफ एक्स, अल्फा भी 1 है, बीटा भी 1 है, आयोटा बार जो है क्या होगा, चलो दिखते हैं, आयोटा का है माइनस आयोटा, सो इट शुड बी माइनस, let me write it as iota minus iota txy plus iota tyx is equal to 0. That is iota को हम बाहर निकाल सकते हैं, है ना? So it would be, let me write it like this, t of y x minus txy is equal to 0 for all xy belonging to h, where इसको मैं नाम दूं 1 in 1, एंड चूंकि ये कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकते हैं अल्फा बीटा, राइट, एंड टेकिंग अल्फा इक्वल टू आयोटा एंड बीटा इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1, हमें क्या मिलेगा, अल्फा को 1, अल्फा को आयोटा कर लो, बीटा को 1, बीटा खत्म, सो यू हैव अल्फा बार इनटू आयोटा बार इनटू आयोटा, so that would be minus iota into iota, that would be plus 1, so it would be actually ऐसे, अब यहाँ txy आ जाएगा, ऑफ कोर्स साथ में आयोटा भी है, तो खैर वो बाहर आ जाएगा, अल्फा आयोटा है तो आयोटा बार आयोटा, हाँ अल्फा अगर आयोटा लिया मैंने, बीटा को 1, सो दिस शुड बी प्लस, दोनों प्लस आने चाहिए, क्योंकि यहाँ आएगा आयोटा इंटू आयोटा बार, दैट्स आयोटा इंटू माइनस आयोटा, दैट्स प्लस 1, सो यू शुड गेट दिस, ये हमें मिलना चाहिए for all x y belonging to h. ये दो equations, let's call them star, let's call this double star. So if we add them, adding star and double star, अगर मैं ऐड करूंगा, as you can see txy cancel हो जाएगा और ये हो जाएगा दुगना, so you get twice ty comma x is equal to 0 for all xy belonging to h. Of course 2 को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, that is it means ty comma x is equal to 0 for all xy belonging to h. Putting अब कोई भी है तो putting x equal to ty, क्योंकि ty भी h में ही है ना, because t is a map from h to h, ये कोई भी हो सकता है, तो मैंने लिया ty x को ty के बराबर, so that would imply inner product ty is equal to 0 for all y belonging to h, which would imply that norm of ty का square is equal to 0 for all y belonging to h, लेकिन ये तो norm है, it means ये तभी 0 होगा जब अंदर का वेक्टर 0 होगा, which means t is identically 0, or simply t is a 0 operator. चलो, so ये हो गया हमारा थ्योरम प्रूव। अब लेकिन रिमार्क में कहूंगा इसमें ये कॉम्प्लेक्स होना, कॉम्प्लेक्स इनर प्रोडक्ट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें हमने आयोटा का इस्तेमाल किया बेसिकली। So the above result is not true. Above result is not true for a real inner product space IPS. For example, given अगर हम देखें T from R2 to R2 एक लीनियर मैप है, given by the matrix, मतलब given by, अगर मैं इसको एक मैट्रिक्स से रिप्रेजेंट करूं, उसको कर सकते हैं 0 minus 1 0. Now this is a bounded, this is a linear map from R2 to R2, and since they are finite dimensional, then अगर मैं इसका नाम T रखता हूं, T belongs to B R2, right? This Hilbert space, this inner product space, actually it's Hilbert because it's finite dimensional, and T of xy जो है T of, let me call it x1 x2, चलो मैं ऐसे लिखता हूँ, इसमें जो ऑपरेशन हम करेंगे किस पे करेंगे,
हम करेंगे 2 डायमेंशनल वेक्टर पे। t of x is the same thing as t of x1 x2 of course it is the same thing as जब मैं इस पे वो अप्लाई करूंगा as a column vector so it will be just y minus x मतलब तुम्हें सिंपली मल्टीप्लाई करना है या तो रो क्योंकि हमने रो वेक्टर्स लिए हैं तो लेफ्ट से करेंगे यानी x y into matrix 0 1 minus 1 0 बराबर होगा किसके बराबर होगा this would be 0 into x y into यहाँ नहीं गड़बड़ हो रही है मैंने रोज हाँ मैंने कॉलम वेक्टर लेने चाहिए पर चूंकि मैंने रो लिए रो में कॉलम में थोड़ा सा फर्क हो जाता है यानी मुझे यहाँ माइनस लेना चाहिए हालांकि उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं इवेंचुअली लेट मी राइट इट एज आई थिंक -1 0 अब सही है नहीं -1 1 so this would be y and of course this would be -x तो मैं यहाँ ये माइनस हटा देता हूँ यहाँ ये प्लस है क्योंकि मैंने रो वेक्टर्स लिए वैसे कॉलम वेक्टर्स लेते हैं बट डजंट मैटर एक ही बात है रो कॉलम इट्स 2 डायमेंशन so ये मुझे मिलेगा t of x1 is equal to this thing so therefore अगर मैं कहूँ what is t x x it would be the inner product of or the dot product of the vector let me मैंने गलत लिखा फिर से मैं xy लिख रहा हूँ यहाँ मैं लिख रहा हूँ थोड़ा सा गड़बड़ यानी I should यहाँ क्या आना चाहिए बजाय xy के क्योंकि उससे कंफ्यूजन हो सकता है मैं इसको लिख सकता हूँ x1 x2 और यहाँ पे मिलेगा मुझे x2 minus x1 सो x2 होगा इसका रिप्रोडक्ट यहाँ मुझे मिलना चाहिए x2 minus x1 सो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा वो तो यूजुअल इनर प्रोडक्ट होगा यानी इट वुड बी x1 x2 डॉटेड विद इनर प्रोडक्ट नहीं tx है txt सॉरी तो हाँ तो इट शुड बी x2 x1 और x किसके बराबर है x1 x2 और इन दोनों का जो इनर प्रोडक्ट है इट्स x2 x1 minus x1 x2 which is equal to 0 for all x सर ये फिर से प्लीज लास्ट वाला स्टेप लास्ट वाला स्टेप मैंने इनका डॉट प्रोडक्ट लिया R2 में इनर प्रोडक्ट क्या है यूजुअल डॉट प्रोडक्ट पहले कंपोनेंट को पहले कंपोनेंट के साथ दूसरे को दूसरे कंपोनेंट के साथ ये x2 है सर इससे पहले मैं कह रहा हूँ ये जो ये हमने ऑपरेटर बनाया ना इसका नाम t है राइट और मैंने थोड़ा सा कर दिया क्योंकि मैंने रो वेक्टर्स लिए तो उससे मुझे इसका जो आर्गुमेंट है वो राइट पे लिखना पड़ा राइट अदरवाइज अगर हम इसको ऐसे लिखते ना जैसे मैंने पहले लिखा था तो मैं ऐसे कर सकता था तब मुझे लेने थे इसके कॉलम वेक्टर्स तो ये बन जाता अगेन द सेम थिंग x2 x1 बट x2 minus x1 सॉरी x2 minus x1 तो मतलब ये सिर्फ रो और कॉलम का चक्कर है यहाँ पे आर्गुमेंट रखें कि यहाँ पे रखें क्योंकि मैंने अब रोज में लिखा था तो मैंने ऐसे लिखा बट डजंट मैटर अगर हम कॉलम्स में भी लिखते हैं तो भी चलता इंपॉर्टेंट ये है कि जो tx का x के साथ डॉट प्रोडक्ट है वो हमेशा 0 मिलेगा फॉर दिस बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर t and of course this is not a zero operator it does not send everything to 0 but t is not 0 क्योंकि 0 का मतलब हुआ 0 मैट्रिक्स ये तो 0 मैट्रिक्स नहीं not zero so t 0 नहीं है although tx का x के साथ अगर हम इनर प्रोडक्ट लें वो हमेशा 0 मिलेगा लेकिन कॉम्प्लेक्स के लिए ये ट्रू कॉम्प्लेक्स के लिए एग्जैक्टली हमने यही प्रूव किया हमने माना फॉर अ कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस अगर tx is equal to 0 देन हमने जो यहाँ प्रूव किया ना t is equal to 0 यानी ये वाला इसके लिए ट्रू नहीं है वजह है क्योंकि this is not a complex vector space it's a vector space over R it's a real vector space R2 inner product space so that was the point okay अच्छा मुझे बता दो तुम्हारा एग्जाम कब है सर 12 से नहीं हम तुम्हारा CIA दूसरा तो वही 12 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है उन्होंने इतना पीछे लिया है पहले फंक्शनल एनालिसिस का ही है 12 अप्रैल को है आर यू श्योर जी सर हमारा डेट शीट आया था अच्छा ठीक है
सर ये ऑफलाइन लेना है ऑनलाइन? नहीं तब तक देखिएगा ना, इसीलिए पूछा मैंने सोचा अगर जल्दी है इसी हफ्ते में तो देखते फिर ऑनलाइन लेंगे कि ऑफलाइन, लेकिन अभी तो उसमें सर टाइम फिर है हम ना। लेंगे इसी टाइम। हाँ सर फिर लेंगे फिर फंक्शनल एनालिसिस का। सर नहीं, नहीं, जो अभी डेटशीट अगर आया पी फॉलो कीजिए। मैं वही कह रहा हूँ, अभी तो टाइम है ना, इसलिए हमें अभी ऑनलाइन ऑफलाइन की सोचने की जरूरत। मैंने सोचा अगर इस हफ्ते में है तो सोचना पड़ता ना कि कैसे लेंगे, है ना, इसीलिए मैंने पूछा। ओके, अब हम ये करेंगे कि हम थोड़ा ये जो ऑपरेटर्स हैं इनको डिस्टिंग्विश करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ दिस एडजॉइंट ऑपरेशन, मतलब इसकी कुछ क्लासेस को डिफाइन करेंगे। अब हमें पता है ना बी एच में एक ऑपरेशन होता है जो एक ऑपरेटर को कुछ दूसरी शक्ल दे देता है। ऑफ कोर्स इट्स प्रिजर्व्ड बाय दैट रिलेशन कि x t स्टार ऑफ y इज इक्वल टू txy, ये तो है ही। लेकिन अब ये जो बी एच है हमारा, एक कलेक्शन ऑफ ऑपरेटर्स जो हमारा है, अब इसमें बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं। इसके बेसिस पे हम क्लासिफाई करेंगे कुछ ऑपरेटर्स, तो वही हम लिखने वाले हैं कुछ डेफिनेशंस। वो ये है, an operator T belonging to this BH and a bounded linear operators in H is said to be self-adjoint, is said to be self-adjoint. Obviously enough क्या होना चाहिए इसमें कि T अगर T स्टार के बराबर, T is equal to T star, right? पहला मैं लिखता हूँ इससे to be, पहला ये पहला पार्ट सेल्फ एडजॉइंट अगर ये है। सेकंड पार्ट इट्स कॉल्ड नॉर्मल if it conjugates with its adjoint, यानी t star is equal to t star t, इसको हम बोलते हैं नॉर्मल। और इसको ऑब्वियसली फिर थर्ड हम बोलते हैं व्हाट वी कॉल, इट्स कॉल्ड यूनिटरी if adjoint is the inverse, that is if unitary unitary if t star is equal to t star t is equal to identity, and it's called an isometry, both obvious. And fourth, isometry if क्या होना चाहिए, norm of tx is equal to norm of x for all x belonging to h। तो ये कुछ किसमें on the basis of this operation है। प्रूफ, मतलब प्रूफ क्या, थोड़े से ऑब्वियस ऑब्जर्वेशन। पहला तो ये कि यूनिटरी अगर है इट ऑटोमेटिकली इंप्लाइज, नहीं सॉरी, अगर सेल्फ एडजॉइंट है it automatically implies unitary, है ना। अगर सेल्फ एडजॉइंट टी और टी स्टार सेम है तो यूनिट मतलब यूनिटरी तो होगा ही। नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, सेल्फ एडजॉइंट implies नॉर्मल, सॉरी, इट implies नॉर्मल। और यूनिटरी अगर हो तो वो भी ऑटोमेटिकली इंप्लाई करेगा नॉर्मल, दैट्स ऑब्वियस, क्योंकि ये भी फिर टी इंटू टी होगा, ये भी फिर टी इंटू हो गया। अगर सेल्फ एडजॉइंट तो नॉर्मल ऑटोमेटिकली। और हाँ, अगर यूनिटरी है तो नॉर्मल भी है, क्योंकि पहले इन दोनों को बराबर होना है फिर उसको आइडेंटिटी के बराबर होना है ना। ये तो इससे एक्स्ट्रा कंडीशन है, मतलब एवरी यूनिटरी ऑपरेटर इज अ नॉर्मल ऑपरेटर, मेरे कहने का मतलब है। और एवरी सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर इज अगेन नॉर्मल ऑपरेटर, ठीक है। और ऑफ कोर्स यूनिटरी आल्सो मींस आइसोमेट्री, ये इंपॉर्टेंट है। यूनिटरी आल्सो इंप्लाइज आइसोमेट्री, लेकिन उसके लिए हमें थोड़ा दिखाना पड़ेगा। यूनिटरी इंप्लाइज आइसोमेट्री हम मतलब दो लाइंस में प्रूव कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। यूनिटरी का क्या मतलब, यूनिटरी का मतलब है कि टी स्टार टी आई के बराबर है। तो देन फॉर ऑल x belonging to h I should have norm of x square is equal to x inner product with x. You can write it as identity of x inner product with x, लेकिन identity बराबर है t star t of x at x
और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कंपोजिशन पर, और यूजिंग दैट कैरेक्टराइजिंग प्रॉपर्टी इट इज एक्चुअली tx which is nothing but norm of tx को, यानी इससे हमें मिला अगर यूनिटरी है तो tx norm of tx is equal to norm of x, that is t is isometry। और अगर तुम देखो तो एक्चुअली उसका आधा ही हमें चाहिए, पूरा मतलब एक ही हिस्सा, क्योंकि यूनिटरी में एक्स्ट्रा एक है ना कि t स्टार t इज इक्वल टू t स्टार इज इक्वल टू i, ठीक है। सो ओके, so लेट्स इसी के रिगार्डिंग हम कर सकते हैं, ये यही है इसी का थोड़ा अगर हम रेगुलर फॉर्म में लिख दे तो एज अ थ्योरम लिखते हैं छोटा सा बेसिक कुछ ना रिगार्डिंग दीज ऑपरेटर, जैसे यूनिटरी वुड ऑलवेज इंप्लाई आइसोमेट्री, आइसोमेट्री भी ऑलमोस्ट इट इंप्लाइज यूनिटरी, बट वो हम आगे करेंगे। सो इफ t belongs to bh, ये हम कर सकते हैं एक छोटा सा थ्योरम, the following conditions are equivalent, following conditions, एक तो हमें कर ही दिया ऊपर एक्चुअली डेफिनेशन में है। पहला देखो हम यहाँ पूरा यूनिटरी नहीं कर रहे हैं, t star t is equal to I, second is tx ty is equal to xy, मतलब इनर प्रोडक्ट अगर प्रिजर्व होता है तो वो इक्विवेलेंट टू दिस कंडीशन है, मतलब दिस इज नॉट द कंप्लीट फोर्स ऑफ यूनिटरी होना, ये उसका आधा ही है। फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंगिंग टू एच, इरफान तुम अटेंडेंस ले लेना। और तीसरा आइसोमेट्री, यानी टी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू एच। प्रूफ इजी है वैसे, वन इंप्लाइज टू, सो वो हम अभी कर चुके हैं एक तरह से कि देखो टी स्टार टी आई के बराबर है, तो इट इंप्लाइज दैट इफ दिस इज ट्रू देन आई कैन राइट टी स्टार टी एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स वाई, ये तो आइडेंटिटी है, which would imply that tx ty is equal to xy for all xy belonging to h, of course for all xy belonging to h। तो पहला वाला तो first implies 2 is straightforward, 2 implies 3 भी easy है। 2 implies 3 क्या है, ये 2 पहले ये है, now if, चलो मैं लिख देता tx ty अगर बराबर है xy के for all xy belonging to h, then letting x equal to y, हमें क्या करना है, क्योंकि सभी x के लिए है, तो अगर मैं x को y मान लूं, so it means tx is equal to what, xx, which implies that norm of tx is equal to norm of x। Again, this is the third property। और तीसरी, जैसे अगर आइसोमेट्री है, 3 implies 1। Now suppose क्या है अपना, norm of tx is equal to norm of x for all x belonging to h, तो आइसोमेट्री है, तो it would imply that उस दोनों को स्क्वायर करेंगे तो ऐसा कुछ मिलेगा ना हमें, squaring both sides you will get this, which would imply of course क्या मिलेगा इससे, t को इधर ले जाएंगे या इसको यहाँ ले जाएंगे तो you will get t star t of x comma x is equal to x comma x for all x belonging to h। अब इसको ट्रांसफर करेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे राइट हैंड साइड को, so you will get basically t star t of x
जहां ले जाएंगे तो इट शुड बी -x, x is equal to 0 for all x belonging to h. So that would mean that you should get t star t of x is equal to x for all x belonging to h, which means that t star t is equal to int. So अगर आइसोमेट्री है जो कि हमने यहाँ यूज किया, then this is true. लेकिन आइसोमेट्री need not imply यूनिटरी. यूनिटरी का आधा हिस्सा एक तरह से हमें मिलता है, ठीक है ना. बिकॉज रिमार्क में मैं कह सकता हूँ, मतलब an isometry need not be unitary. For example, अगर मैं t लूं from L2 to L2, t given by we take a sequence x1 x2 and shift it towards right, यानी ये 0 x1 x2 में लिखता हूँ, right? t is an isometry, ये तुम आराम से चेक कर सकते हो. t is an isometry का क्या मतलब है? इसका अगर मैं लूं summation of square then square root, वो भी वही आएगा जो x का है, यानी norm of tx होगा बराबर 0 से तो कोई फर्क पड़ता नहीं, फिर भी अल्टीमेटली क्योंकि L2 में है हम infinity, which is the same thing as norm of x. तो ये isometry तो है, but t is not unitary. Why? Because it does not have an inverse. Because it does not have an inverse. क्योंकि यूनिटरी का मतलब इनवर्स होना है ना. जब मैं कह रहा हूँ t star t is equal to t star तो is equal to identity, तो एक्चुअली मैं कह रहा हूँ कि t adjoint is the same thing as t inverse. अब उसके लिए इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए बाइजेक्शन होना जरूरी है, और ये ऑब्वियसली ये बाइजेक्शन नहीं है. बाइजेक्शन इसलिए नहीं है क्योंकि अगर मैं तुम्हें कहूं इसकी प्री इमेज क्या है, 1 3 1 1/2, चलो 0 0, इसकी प्री इमेज क्या है, ये तो इसकी